Kolkata, the city of joy, is a multicultural city home to more than 14 million people. Kolkata boasts of its cultural richness and literary heritage. However, at least 1/4 of the population live in poverty, and the majority of these are children. They live on the streets and overcrowded slums in the most appalling conditions one could ever imagine. But there is still hope. The Hope Foundation was set up by Maureen Forrest in 1999 to provide protection and safety to 20 girls in Kolkata who were forced to survive on the streets alone and vulnerable as young teenagers. The Hope Foundation believes in a world where it should never hurt to be a child. Hope works with street-connected and slum communities to overcome poverty through 60 projects in the areas of education, healthcare, protection, and livelihood. Hope believes in inclusive and quality education as one of the key pillars of development. We believe that every child, irrespective of economic condition, gender, and/or disability, have right to access and continue education. In alignment with the Sustainable Development Goals, we have prioritized quality education, and presently we reach out to the children of the age group of 2 to 18 years through our different programs, starting from community-based education projects to supporting formal schools and government resource centers. We started our journey with one education center, and presently after 2 decades, we have reached out to more than 80,000 children. Through our different community awareness programs, sensitization programs, we have reached out to 96,000 people of street-connected and slum communities of Kolkata and Howrah. Early childhood care and education is provided to children aged 2 to 5 years in a fun, energetic, and child-friendly environment. The children are encouraged to learn through play using activity-based, child-centric, and Froebel methodologies for the holistic development of each child. হোপের এই ক্রেশগুলোকে সাপোর্ট করার মূল উদ্দেশ্য হলো এখানে যে সকল বাচ্চারা আসে তাদের বাবা মারা দুজনেই কাজে যান এবং এরা মূলত জঞ্জাল বাছাই করা, কাজ বাছাই করা, মাটির জিনিস তৈরি, লোকের বাড়ি কাজ করা এবং রিক্সা ও ভ্যান চালক এই সকল পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে, যার ফলে বাচ্চারা কোথায় থাকবে সেটা একটা বড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যে সকল বাচ্চারা এখানে আসে শিক্ষার সাথে সাথে তাদেরকে পুষ্টিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, ওরা এখানে খাবার পেয়ে থাকে এবং বাচ্চারা এখান থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, যার ফলে বাচ্চাদের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন উন্নতির প্রকাশ আমরা ঘটাতে পেরেছি। The Nobo Asha program provides education, counseling, and supplementary nutrition to slum and street-connected children. The project prepares children to be enrolled in school, and the children continue to attend the centers after school for extra support. This support is vital, as many of these children are the first in their family to ever attend school. Children and community groups have been trained to ensure there is no child marriage, child labor, child addiction, or abuse, and to ensure the children continue their education. जब से नोबो आशा सेंटर आया है तब से मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग का लाइफ चेंज हो गया है। और फिर लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हम लोग को जो टीचर्स लोग हैं उधर वो लोग भी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि हम लोग के पास फ़ोन नहीं था तो वो लोग हम लोग जाते थे सेंटर में तो मैम लोग अपना फ़ोन से हम लोग को ऑनलाइन क्लास करवाती थी। पहले हम बहुत शर्माते थे, कोई से मतलब अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते थे, तो अब वैसा नहीं है। पहले जैसे थे वैसे हम बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई से भी मतलब हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। Many families are living in Chitpur slum for generations. The main livelihood of the people is sorting scraps and recycling. Many boys and girls leave school and become child laborers, sorting scraps to earn money. Education on Wheels
is a mobile education center for these children in Chitpur. Education and counseling are provided to prepare dropout children to be enrolled in school. Once enrolled in school, the children continue to attend the center for extra support. ওখানে স্কুল পড়তাম পিপির থেকে স্কুল পড়ার পর দিয়ে আমি 4 অবধি পড়েছি 4 অবধি পড়লে আমার মা বাবা আমাকে এখানে আনেছে এখানে এসে আনলে তারপর আমরা কাছের কাজ করতাম কাছের কাজ করার পরে আন্টিদের সাথে আমাদের দেখা হলো আন্টিরা বললো কি তুই পড়াশোনা করতে চাস আমরা বললাম কি হ্যাঁ তারপর মা বাবাকে বললো মা বাবা বললো কি হ্যাঁ তারপর মা বাবা আন্টিদের বললে তারপর আন্টিরা ওই স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলো তারপরে সব এমনি হয়েছে তারপরে এই স্কুলে আমরা আসলাম আমি বড় হয়ে টিচার হতে চাই Many children with special needs are still not enrolled in primary school, special school, or government resource rooms. This is particularly common in underserved communities, such as those living in slums and on the streets. Hope set up the Bryansway Resource Center, which provides special education and therapies to children. A special bus collects the children from their homes and brings them to the resource center and for educational trips. আমার বাচ্চা যখন এই সেন্টারে আসে প্রথম আমার বাচ্চা প্রচণ্ড হাইপার ছিল এক জায়গাতে একটা মিনিট বসাতে আমি পারতাম না এইখানে আসার পর সব রকম থেরাপি করার পর এখন আমার বাচ্চা প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন ফলো করে প্রত্যেকটা কাজ করে এমনকি এভরিডে 2 ঘন্টা ঘরে বসে সব কাজও কমপ্লিট করে এখানে আসার পর থেকে আমার বাচ্চার হাইপারনেস অনেক কমে গেছে মানে অনেক দিক থেকে বেটার হয়ে গেছে ব্রায়ান্সওয়ে থেকে আমাদেরকে বাস দেওয়া হয়েছে এই বাস ফ্যাসিলিটি পাওয়ার পর আমাদের আরও বেশি সুযোগ সুবিধা হয়ে উঠেছে Hope supports the Ummeed Education Project for children with special needs who have been abandoned, orphans, or from marginalized families. Children in the age group of 2 to 6 years of age are provided with special education and therapy support. Hope is working along with the government of West Bengal to strengthen the education system of 47 government schools in Kolkata. The project focuses on quality education through joyful learning, especially for children with learning gaps, and to ensure that children with special needs access government resource rooms for inclusive education. Hope is also working with 10 government resource rooms to provide therapies to the children with special needs, which was not available earlier. Special equipment is provided by Hope, and the teachers and parents are capacitated on early identification of children with special needs. होप फाउंडेशन हमारे स्कूल में करीबन 10 वर्षों से काम कर रहे हैं आस्ते आस्ते करके शिक्षा का क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है खासकर हमारे बच्चे जो ड्रॉप आउट होते थे उसमें होप फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हमारी सहायता करते थे और आज भी कर रहे हैं उन्होंने एक अमार बंधु नामक एक किताब भी लाए थे जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं क्लास में ही उनको उनके साथ बैठाकर उसको समतुल्य लाया जाता है जो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं आज इस वर्ष जो 2022 में हम लोग के स्कूल में जो डिजिटल लर्निंग के बारे में जो हम लोग आलोचना करके आपस में और डिजिटल ट्रेनिंग के साथ प्रोजेक्टर भी बैठाया गया जिससे हमको लगता है कि और बच्चे ज़्यादा तरक्की करेंगे पहले से क्योंकि देखा हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है Hope set up its education sponsorship program in 2000. Over 1,000 children in Kolkata and rural areas such as the Sundarban are sponsored every year from preschool to university.
Education sponsorship covers school books, uniforms, fees, after-school coaching, and a monthly nutrition packet. Hope also runs 2 coaching centers for sponsored children in 2 of the most impoverished slum areas in Kolkata. The children attend these centers after school, where the tutors support them to continue their education in a joyful learning environment. होप के आने से पहले मैं और मेरे फैमिली और मेरे 2 भाई हम सब भागाड़ में रैग पिकिंग करते थे और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब था कि एक दिन का भी खाना हम लोग जुटा नहीं पाते थे। उसके बाद जब होप आया, हमें एजुकेशन दिए, हमारा पढ़ाई करवाए और आज मैं इन्हीं की वजह से मास्टर्स कर रही हूँ। We are extremely grateful to all our supporters, helping us to achieve our mission and commitment to the children and their families in Kolkata. Every child has right to better and safer future, and education provides that opportunity and hope. To know more about Hope, please visit our website.